infrastructural development, augmentation of teaching learning processes, expansion of research and innovation, organization of faculty empowerment programs and training sessions for the staff and the non-teaching staff, deepening stakeholder engagement, administrative reforms, greater digitization, industry institution linkages, and collaborations. The college has made big initiatives in the form of setting up of the Technology Business Incubator, launching an in-house interdisciplinary research and innovation project scheme, entering into MOUs, conducting regular FDPs, refresher courses, national and international conferences. It's the unabating efforts of the IQAC and our young and dynamic principal that has made it possible to secure All India 6th rank in NIRF ranking and All India 6th position in the India Today rankings 2022 in the placement category. The research publication score of the college was the highest among all Delhi University colleges as per NIRF 2022 and 23, which speaks highly of the research, innovations, and initiatives of ARSD IQAC. And a NAC grade of A++ with a score of 3.77 CGPA, we stand first in the second cycle amongst all the colleges all over India. Now coming to the conference, आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक उपलब्धियों के शोर में प्राचीन और पारंपरिक ज्ञान पद्धतियों को लगभग भुला दिया गया है, जो हमारी लोक परंपराओं में सुरक्षित रहे हैं। उनमें से कुछ एक की याद तब आती है जब कोई बड़ा वैज्ञानिक तथ्य किसी लोक परंपरा से जा जुड़ता है। हमारे देश में अब भी अनेक स्थानों पर प्राचीन ज्ञान परंपराएं विद्यमान हैं, जिन्हें लोक ने सहेजे रखा है। कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों का ध्यान इन ज्ञान परंपराओं की तरफ गया है और वहां इन पर शोध हो रहा है। भारत की प्राचीन ज्ञान पद्धतियां अभी समाप्त नहीं हुई हैं। जरूरत है तो उन्हें आधुनिक ज्ञान पद्धतियों के साथ जोड़कर देखने और नए सिरे से समझने की। आज जब शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय भाषा, संस्कृति और परंपराओं पर ज्यादा बल दिया जा रहा है, तो एक सीधा और सहज प्रश्न बनता है कि क्या भारतीय लोक परंपराओं का अध्ययन किए बिना भारत को समझना संभव होगा? क्या भारत की ज्ञान परंपरा को समझने के लिए शास्त्रीय परंपरा का अध्ययन पर्याप्त है? अब समय आ गया है इन सवालों को उठाने का और इनके माध्यम से ज्ञान को पुनः अविकृत करने का। भारतीय समाज का निर्माण हजारों वर्षों में हुआ है। इसके चेतन और अवचेतन की कई परतें हैं और इन परतों को समझे बिना भारत की मुकम्मल समझ पाना मुश्किल है। इन ज्ञान परंपराओं को समझे बिना भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देखना एक आधी अधूरी बात बनकर रह जाएगी। भारतीय ज्ञान की परंपरा लोक और शास्त्र दोनों से संपृक्त है। यहाँ लोक और शास्त्रों दोनों एक दूसरे से के पूरक हैं। ज्ञान के विविध क्षेत्रों के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी प्राचीन काल से लोक में हुआ है। लोक की अपनी समझ और विचारधारा होती है जिसे वह अपनी शैली में अभिव्यक्त और उसका संरक्षण करता है। We are thrilled to have you here with us as we embark on a journey to explore the rich and vibrant tapestry of India's folk culture. This course will not only serve as a refresher, but also as an opportunity to delve deeper into the myriad traditions, art forms, and customs that have shaped the soul of this incredible nation. India's folk culture is like a kaleidoscope of colors, languages, and traditions, with each region and community contributing its unique hue to the magnificent mosaic of Indian heritage. From the rhythmic beats of traditional music to the captivating stories woven in every dance step, from the flavors of regional cuisine to the intricate craftsmanship of indigenous art, this course aims to celebrate and preserve the essence of India's folk culture. Over the coming days, we will immerse ourselves in the enchanting world
of Indian folk culture, exploring its diversity, historical significance, and the contemporary relevance. Our goal is not only to inform, but also to inspire a deeper appreciation for the cultural wealth that has been passed down through the generations. So let's embark on this fascinating journey together, where each thread of our discussion weaves another layer into the magnificent story of India's folk heritage. Thank you all for being a part of this enriching experience. And let's get started on our exploration of the Indian folk culture, a tapestry of diversity. Thank you. Over to you, Anjali. Thank you, ma'am, for sharing with us the experiences which are in store for us in next couple of days. Now, it's my pleasure to invite Professor Gyantosh Kumar Jha sir to share his words with us. Professor Jha, as the principal of Atmaram Sanatan Dharm College, has led it to achieve new heights, which is reflected in the A++ grade in NAC, highest in the university, and NIRF All India Rank 6. Sir is a M.Phil and Ph.D. who specializes in Hindi, Natak, and Rangmanch. Sir has a teaching experience of more than 30 years, and to his credit, he has a number of research publications in national and international journals of repute, chapters, book reviews, and books. We always look up to Sir for inspiration, guidance, and undeterred support that he provides for each and every endeavor of the college. Over to you, sir. Sir, request you to thank you, sir. Thank you, Anjali. सम्माननीय प्रोफेसर बद्री नारायण जी, नमस्कार. IQAC coordinator Professor Vinita Tuvi and co-convener for this refresher course, Professor Anjali Gupta, members of the organizing committee, and all the participants who are present in this beginning session of the refresher course. सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है और हमारी IQAC के द्वारा रामानुजन कॉलेज के TLC के सौजन्य से इस रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन हमने किया है आप सबके लिए, जिसका विषय है भारतीय लोक परंपरा के विविध आयाम, इंडियन फोक ट्रेडिशंस, अ टेपेस्ट्री ऑफ डाइवर्सिटी. दरअसल इस विषय को रखने के पीछे क्या उद्देश्य रहे हमारे, मैं ऐसा समझता हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने के लिए और भारत को समझने के लिए जो शास्त्रीय ज्ञान परंपरा है और जो लोक परंपरा है, दोनों का अध्ययन आवश्यक है. कई बार शास्त्र के नियमों में उलझकर हम लोक परंपराओं को अनदेखा कर देते हैं और मुझे लगता है कि वहीं ज्ञान बोझिल और जटिल हो जाता है. कई बार जब परंपराएं आगे चलकर के कुछ ज्यादा ही नियमबद्ध हो जाती है तो वो शास्त्रीयता का या क्लासिकल रूप ले लेती है. एक तरह का एक हमारे शास्त्रीय और लोक परंपराओं के बीच कहीं ना कहीं लोगों ने अंतर्विरोध भी देखा है और मुझे लगता है दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं. कई सारे जो लोक परंपराएं हैं या लोक कलाएं हैं, उनका प्रयोग हम लोगों ने साहित्य में, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में देखा है. तो मुझे लगता है कि आज जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई और जिसमें भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति,
भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा पर विशेष रूप से अध्ययन करने पर बल दिया गया। तो मुझे लगता है कि हम शिक्षकों के लिए भी ये जरूरी है कि हम शास्त्रीय परंपराओं के साथ लोक परंपराओं का ज्ञान और अध्ययन भी करें। दोनों के बीच अंतर्विरोध क्या है, कहीं विरोध है या दोनों एक दूसरे के पूरक, इन सारे सवालों से हम रूबरू हों और इस पे जरूर एक सार्थक और सटीक बातचीत होनी चाहिए। इसीलिए लगभग ये 2 हफ्ते का ये कार्यक्रम, जिसमें विभिन्न विषयों पर हम बातचीत करेंगे, और मेरी कोशिश है कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम संपूर्ण भारत में जो एक लोक संस्कृति है और जो लोक परंपरा है और उसके जो विविध रूप हैं, उससे जरूर एक बार आप सबका परिचय कराएं, उस पर एक बातचीत कराएं, उस पर आपकी जो प्रश्नाकुलता होगी, आपकी जो जिज्ञासा होगी, उसको उन व्याख्यानों के माध्यम से या बातचीत के माध्यम से जरूर समझने का यत्न किया जाएगा। तो यह एक प्रयास है और हम लोग अपने कॉलेज के माध्यम से इस तरह के शिक्षा के क्षेत्र में नए बदलावों को लेकर के निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और मुझे लगता है कि यह एक सकारात्मक प्रयास है उसी दिशा में और इससे कुछ अच्छा ही निकलेगा। मैं प्रोफेसर बद्री नारायण जी का पुनः स्वागत करता हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त समय से कुछ हमारे लिए समय निकाला और हमारे निवेदन को स्वीकार किया। मैं कृतज्ञ हूं कि वो आज बीज वक्तव्य देंगे इस विषय पर। पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार और मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for judicious words full of valuable knowledge and enthusiasm, sir. Your support is always an encouraging motivator for us, for which we are really grateful to you, sir. Now, it's my privilege to invite Professor Badri Narayan, sir, to deliver his keynote address. Sir is the recipient of coveted Sahitya Akademi Award in 2022 and is director of G.P. Pant Social Sciences Institute of Prayagraj. Professor Narayan is a social historian and cultural anthropologist who has interest in popular culture, social as well as anthropological history, Dalit and sublateral issues, and relationships between power and culture. Sir, to his credit, has more than 100 publications in reputed national and international journals in both English and Hindi. Professor Narayan is the mentor of UGC appointed PMMMNIT also. Professor Narayan has a teaching and research experience of more than 20 years and to his credit has more than 20 books. The most recent one is published in year 2021 titled Republic of Hindutva, How the Sangh is Reshaping Indian Democracy. सर की पुस्तकें जैसे लोक संस्कृति और इतिहास, लोक संस्कृति में राष्ट्रवाद, माटी पानी में सनी बौद्धिकता, उपेक्षित समुदायों का आत्म इतिहास, उनके भारतीय लोक परंपरा के क्षेत्र में किए गए उनके शोध कार्य को दर्शाती है. I am so grateful to you, sir, for just sparing your valuable time for this refresher course and delivering the keynote address. Over to you, sir. Thank you, Professor Anjali. I am very obliged to your college for inviting me for this discussion. And it's a very pertinent issue on which we are going to discuss in the entire week. And actually, Lok and Shastra, and I'm thankful to the principal of the college, Professor Gyantosh Kumar Jhaji, for inviting me in this course to deliver Bij Vaktavya. I am going to deliver Bij Vaktavya in real sense Bij Vaktavya because I don't have much time to elaborate that. So I will just flag some issues and those issues may be discussed in the entire course. One is Lok and Shastra are not opposite to each other, not contradictory to each other. They give and take to each other, they supplement to each other. Secondly, Shastra, we always think that
there is a two-way. One is Shastra is everywhere, even in the folk. There is another interpretation, folk is everywhere, even in the Shastra. I think we should accept that folk, when become grammatized and become Shastric, it transforms in the Shastras. Vedas in the earlier, in its beginning, were in the folk. And when they become they Shastrize, then it turned as a Shastra. Shastra is a kind of grammar, canon, it's a kind of disciplining the knowledge, and also philosophizing the knowledge, giving the high spiritual meaning, giving the high philosophical meaning. So Loka and Shastra in one way complementary to each other. If you go in tribal cultures, there was a great historian, his name was Professor G.C. Pandit. He always used to tell to me that, see, even in the tribal culture, you can find the impression of the Shastras. And even in the Shastras, you can see the impression of the tribal life cultures, life universe. Thirdly, which I'm going to propose, that look, because it's oral, it's flexible, it's always changing. It always try to adopt the nuances of the time. It changes. Shastra also change, but it takes long time to change the Shastra. But the folk keeps changing. And the folk keeps changing. So the flexibility in the folk, you can find a greater extent than the Shastras. Fourthly, the Shastra, folk, as I said, folk is not static. There are some structures of the folk which can't change, which repeat itself from one time to another time frame. But many things on that frame comes being added, deleted, and evolve in a new way. So in that way, folk, the grammar of the changes in the folk is this, that there are certain aspects of the folk which remain constant, and the other things comes and join with them, edited, deleted, added, and repeated also. Even in the repetitions, as we know, you can find the creativity of folk is very creative domain. Folk is very creative domain. They always ready to take from wherever the possible. जहां से भी हो सकता है वो लेते हैं, और जहां से को भी हो सकता है देते हैं. लोक की एक और जो खूबी है, that is multiplicity. Lok is multiple. Lok is not homogeneous. Lok is, when I'm saying it's not homogeneous, I'm not going to say that it's a fragmentary. I'm going to say that it's a multiple. Bahulta, you can find in Bahulta in the folk. How this Bahulta comes in folk? Because folk evolves with the life experiences. And life experiences gives you the attitude to be multiple. Like if you go and collect when I was doing my work on Chuharmal, I wrote a book documenting dissent, contesting fable, contested memories, and the political discourse, published for my Shimla. So I was doing field work in Makama in Bihar on collecting folk stories around a myth that is called the myth of the Chuharmal. Chuharmal is a Dushat icon and the deity in that area. People worship Chuharmal. I collected around 30 versions of the same story in the same society. Every caste narrates Chuharmal in its own way. In their caste memory, Chuharmal appears in a different way. So in the same Tal, Badaya, Mokama, Tal area, you can find the 30 version of the same story. So you can't, so in that way, I'm saying folk is not homogeneous, because every community, every caste, every social groups try to relate with the icons of the society, with the great memories of the societies, with the reminiscences of the society. And in that process, they do creative changes in the
text. So there is no central text in the folk. There are some centrality of the text always get evolved, changes. As you know, like Ramanujan work, you know, many folklorists try to collect multiple versions. But these versions are not opposite to each other. They interact with each other. They take and give to each other, even within themselves. Within folk, suppose that the story popular among dominant castes and the story popular among subaltern castes of the same icon, around the same icon, you can find big changes. थोड़ा सा contesting आपको दिखाई पड़ेगा. But in the end, they all gives good messages. बढ़िया मैसेज देते हैं, लोक कल्याण की भावना देते हैं, लोक कल्याण का मंगल देते हैं. Folk derive its authenticity sometime from the शास्त्रिक traditions. Suppose that अगर आपने गांव में देखा होगा तो कीर्तन होता है. कीर्तन में एक व्यास गद्दी होती है. व्यास गद्दी पर जो बैठता है वही कीर्तन शुरू करता है, and others follow them. That tells the tradition. No, the Vyas is not Vyas Gaddi is a space, is a position. If you acquire that, everyone will follow you in the Kirtan tradition. So so in that way, folk is homogeneous, not homogeneous, it's heterogeneous, but its heterogeneity are not contesting to each other. They also supplement to each other. They interact with each other. They change. They contest with each other, but not contest at the level where the things become in a warring ways or violent ways. What we do, we politicians or we people like us, those who are in a big cities, those who are trained in making the things fix, they always try to fix the flexibility of the folk. So, and when we pick up one, select the version, make it selectively pick up a version which may suits to our argument and which we take to the extent where it can become issue of contestation. तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ साथ साथ कि हर समाज समुदाय का अपना लोक है. जैसे अगर आप गांव में जाएं तो जो हमारी दलित बस्ती है और अपर कास्ट की बस्ती है, कुछ ट्रेडिशंस तो सभी में आपको मिलेगा, होली, दिवाली और उनके गीत, कीर्तन के कुछ ट्रेडिशंस भी आपको सब जगह मिलेंगे, काली माई का गीत सब जगह मिलेगा, जो फोक डिटीज हैं उनका मिलेगा. लेकिन दे हैव देयर ओन ट्रेडिशंस ऑल्सो. जैसे गोरिया बाबा, ठीक है, गोरिया बाबा की पूजा दूसरी जातियों के लोग भी करते हैं, बट गोरिया बाबा को जो भजन को लीड करता है, जो उपदेश को लीड करता है, जो रिचुअल को लीड करता है, वो दलित कम्युनिटी का होता है. और रविदास का जो गीत है, कबीर का, अगर आप चमार जसवार बस्ती में चले जाएं वेस्टर्न यूपी और बिहार में, so you can listen their own songs of sanskaras, like death ritual. They have their own death ritual, and that comes from the Kabir tradition. तो उनका गादी लगता है और गादी पर बैठ के वो जो उनके संत होते हैं वो आके on the time of the death ritual they sing the songs, sing the bhajan, sing the sermons. तो वो different होता है. तो हर समाज का अपना एक लोक होता है, लेकिन वो लोक ऐसा नहीं होता कि कहीं का ईंट कहाँ का रोड़ा भानुमती ने कुंबा जोड़ा. इट्स लाइक एक कॉस्मोलॉजी. इसमें बहुत इंटर कनेक्टिविटी होती है. जैसे जो हमारे फोक हीरोज हैं, जो आपने देखा होगा कि जो चुहरमल हैं या जो गोरिया हैं, गोरिया वाज आल्सो फोक आइकॉन, जो हमारे सैलेस हैं या जो हमारे जादुओं के आइकॉन्स हैं, मुसहरों के आइकॉन्स दीना बद्री हैं, डालदेव पासी, बालदेव पासी, जो पासी कम्युनिटी के आइकॉन्स हैं, फोक आइकॉन्स. स्टोरीज में, फोक नैरेटिव में, they always fight against each other, but they also interact with it, and they have interrelations. एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ मिलेगा. ये बड़ा peculiar नेचर है हमारे फोक का, और इवन शास्त्री के स्टोरीज का, जैसे रामायण और महाभारत का आप देखेंगे
तो उसमें हीरोज एंड सब हीरो जो खलनायक भी कह सकते हैं या छोटे छोटे हीरोज हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़ते हुए हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी मोमेंट पर, नैरेटिव मोमेंट पर दे कम टुगेदर, वो कहीं मिले होंगे, कहीं लड़े होंगे। जैसे मुसहर का जो नायक है दीना बद्री, वो मिर्जापुर के का एक गांव है जहाँ के राजा बताए जाते हैं वो, और बट वो बिहार में जाकर के वहां सहले जो चुहरमल से लड़ते हैं। इधर आल्हा उदल जो बुंदेलखंड के का एक बहुत पॉपुलर फोक वर्जन है, उसके नायक यहाँ तक रायबरेली तक आकर के फासिस्ट जो आइकॉन्स हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे लड़ते हैं, आपस में अलायंसेस भी करते हैं। तो ये जो वॉर, जो हीरोज इमर्ज फ्रॉम द दिस फोक वॉर्स एंड इमर्ज एज एन आइकॉन ऑफ द कम्युनिटी, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और फोक से व्हाट वी कैन लर्न कि जीवन में वन शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल। आदमी को कितना लचीला होना होता है, कितना लेना देना पड़ता है एक दूसरे से। और जो लेना देने का जो भाव है, वो मैं हिंदी के जो एक बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं अरुण कमल, उनकी कविता से आपको बताना चाहूंगा कि उनका सारा लोहा अपनी केवल धार, इस जीवन में अपना क्या है, सब कुछ लिया उधार। तो ये जो बोध है, ये बोध फोक का बोध है कि आप जिससे लेते हैं उसके प्रति उधार का बोध रखते हैं, ऋण सो कहते हैं ना, ऋण चुकाना। तो ऋण का जो बोध है वो हमारे ट्रेडिशंस में है। तो जो फोक है, अच्छा फोक में क्या है कि कई बार जो जो माइनर कैरेक्टर्स होते हैं, हो सकता है एक समय में वो बहुत मेजर कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाए। व्हेन टाइम चेंजेस, व्हेन कॉन्टेक्स्ट चेंजेस, तो वो छोटा कैरेक्टर हो सकता है बहुत बड़े कैरेक्टर में वर्ष हो जाए। वो टाइम के इन्फ्लुएंस होता है। दूसरा क्या है कि परफॉर्मेंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज परफॉर्मेंस, फोक इज परफॉर्मेटिव डोमेन। तो परफॉर्मेंस से जब जुड़ता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बिकॉज परफॉर्मर्स सी द ऑडियंस, एंड टू सी द ऑडियंस दे इम्प्रोवाइज देयर नैरेटिव्स। तो उसके कारण कॉन्टेम्परेरिटी बहुत आती है, क्योंकि वो लोगों के कॉन्टेम्पररी उसको फील करता है और उसको अपने नैरेटिव में डालता है। दूसरा, एक तो इस तरह का ये जो मैंने कहा ना, जो इटर्नल फोक है, जो कि इसका एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर कीप चेंजिंग बट द मेन स्टोरी रिमेन द सेम। उनके बीच एक इंटर रिलेशंस होता है, बट देयर आर अदर फॉर्म ऑफ फोक ऑल्सो जो कि प्योरली कॉन्टेम्पररी होता है। जैसे कहीं पुल गिर गया, उस पुल पर आपको रागनी मिल जाएगा वेस्टर्न यूपी में कि भाई कैसे करप्शन हुआ, कैसे वो पुल गिर गया। तो तमाम पॉलिटिकल इवेंट्स पर आपको चरण सिंह के प्रधानमंत्री बनने पर या किसी के सत्ता खोने पर आपको बहुत सारे रागनी और बहुत सारे सॉन्ग ट्रेडिशंस मिल जाएंगे। तो वो कॉन्टेम्पररी उससे प्रभावित होते हैं, और वो लॉन्ग टर्म नहीं होते हैं। जैसे रेडियो में आपने देखा होगा बहुत सारे लोकगीत गाए जाते हैं जो विज्ञापन के लिए गाए जाते हैं, चाहे सरकार के किसी योजना को लेकर के हो या किसी चीज को लेकर। आप याद करिए भरत सिंह भारती के लोकगीत जो वो बिहार अपना टेलीविजन रेडियो से गाया करते थे, तो उसमें बहुत तरह के सॉन्ग्स होते थे। उसमें कुछ इस तरह के भी सॉन्ग्स होते थे किसानों के अवेयरनेस के लिए सॉन्ग्स, बट वो बहुत लंबे समय तक नहीं जीते हैं। लंबे समय तक वही फोक ट्रेडिशन जीता है जो कि किसी बड़े स्टोरी, बड़े नैरेटिव का हिस्सा होता है, और उस बड़े नैरेटिव को वो फोक में ट्रांसफॉर्म करता जाता है। दूसरा क्या है, जो हमारे लाइफ कल्चर से जुड़ा होता है, जैसे पर्व त्योहार फेस्टिवल्स, जैसे जो हमारा ये मिर्जापुर का कजरी है या सोहर है, या ये सारी चीजें लगातार जीवित रहती हैं क्योंकि ये रिचुअल का हिस्सा है। बिकॉज दिस सॉन्ग ट्रेडिशंस आर पार्ट ऑफ आवर रिचुअल, दैट्स व्हाई दे सस्टेन फॉर लॉन्गर टाइम। तो अकेला नैरेटिव कभी भी लंबे समय तक नहीं जीवित रह सकता। जब तक कि वो रिचुअल, कल्चर, संस्कार का हिस्सा नहीं होगा, तो लंबे समय तक जीवित रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि फोक मेमोरीज का जो हिस्सा होगा, और मेमोरीज यू नीड टू रिवाइव अगेन एंड अगेन द मेमोरी। तो कहते हैं ना, याद करने के बहाने होने चाहिए। तो बहाने क्या होगा, कोई फेस्टिवल होगा, कोई पर्व होगा, कोई कुछ होगा। तो इस तरह से एक मेमोरीज हमने अपने कामों में डिस्कस किया है। मेरी किताब है वीमेन हीरोज एंड दलित रिसर्च नॉर्थ इंडिया, उसमें हम बताते हैं कि कैसे जो हमारे दलित फोक ट्रेडिशंस विकसित हुआ पॉलिटिकल टाइम जो व्हेन काशीराम वाज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश बीएसपी हियर,
तो कैसे उन्होंने पहले स्टैचूज बनवाए दलित आइकॉन्स के, फिर उनके अराउंड एक रिचुअल इवॉल्व किया, फिर उनके अराउंड एक सॉन्ग ट्रेडिशन इवॉल्व किया, फिर उनके अराउंड एक पूरी पॉलिटिकल नैरेटिव खड़ी की। तो वो उसमें वो फिर पूरे समय वो जीवित रहते हैं लोगों के कल्चर में। तो दिस इज माय सबमिशन टू यू दैट folk is very complex domain. Don't simplify it. It's like a parrot. Parrot जिसको आपने बहुत अगर कड़े हाथ से पकड़ा तो it will die. आपको बहुत डेलिकेटली उसको इंटरप्रेट करना होगा एज ए स्कॉलर, वेरी रिगरसली एंड वेरी डेलिकेटली, क्योंकि जैसे ही आप कंक्लूसिव होंगे, स्वीप लेंगे, यू विल डू इनजस्टिस विद द फोक टेक्स्ट व्हाइल वी रिव्यू। मैं तो मना कर देता हूँ बहुत सारे जर्नल्स जो अप्रोच टू मी टू रिव्यू द आर्टिकल्स, बट जो आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं उसमें देखते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स में जो ऑथर होते हैं या स्कॉलर होता है वो स्वीप लेता है उसके बारे में, अपनी एक्सपेक्टेशंस डालता जाता है उनके ऊपर। तो आई थिंक वी शुड ट्राई टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम दिस काइंड ऑफ टेंडेंसी एज ए स्कॉलर while dealing with the folk text, because folk and they are very symbolic, so you need to have a capacity to handle symbol, and symbol को handle करने के लिए एक symbolic समझदारी की जरूरत होती है, जो हम कहते हैं कि हर स्कॉलर को अपने भीतर एक लिटरेरीनेस रखना चाहिए। वो लिटरेरीनेस आपको हर सोशल साइंटिस्ट के भीतर वो आपको मदद करता है इस तरह के फोक टेक्स्ट को समझने एंड एनालाइज करने के लिए। Here I think I'm going to stop my discussion, and maybe the whole week you can discuss this issue in your own ways in various lectures. Thank you for inviting me in this discussion. So I have some other engagement today because my lecture was planned for some other day, but it is shifted. So sorry for not giving much time, but maybe I tried to issue some of the raise some of the issues which may be helpful for you. Thank you so much. Thank you, sir. Respected dignitaries, it is an honor for me to have been given the task of presenting a final vote of thanks for the session. I, Professor Anjali Gupta, on behalf of Internal Quality Assurance Cell, Atmaram Sanatan Dharm College, University of Delhi, Teaching Learning Center, Ramanujan College, and on my own behalf, extend a heartiest vote of thanks to all the honorable guests who blessed us with their benign presence by taking out time from their busy schedule to join this inaugural session of 2 weeks interdisciplinary refresher course. Which is titled Indian Folk Tradition, a Tapestry of Diversity, Bharatiya Lok Parampara ke Vivid Ayam. At the outset, I would like to express my gratitude to Professor Badri Narayan sir for sharing his views on the topic of the refresher course and giving us food for thought. Sir ने संकेत दिया कि लोक और शास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। लोक संस्कृति शास्त्रों की नींव है। सर के इस दृष्टिकोण से हम सब सहमति रखते हैं। लोक संस्कृति समय, वातावरण और लोगों की सोच के साथ बदलती है, जो उसकी सकारात्मकता को दर्शाती है। लोक संस्कृति में सृजन असीमित है और यह हर समाज का अलग अलग होने के बाद भी जुड़े हुए हैं। समझाने की कोशिश की। सर ने अलग अलग क्षेत्रों के लोक के उदाहरणों के द्वारा अपनी बात को समझाया, जिसके लिए हम सब उनके आभारी हैं। लोक को ज्यादा समय तक जीवित रखने के लिए उसका स्थान रिवाज, संस्कृति और संस्कार में होना जरूरी है। सर ने हमें ऐसा बताया जिस सब के लिए हम सर we are very grateful to you, sir, for all your thoughts that you have shared, and definitely it is going to be really giving us a food for thought for the entire refresher course that we will be dealing with on the topics in next couple of days. Thank you. Thank you so We much. would like to express our deep sense of appreciation for Professor Gyantosh Kumar Jha sir for selflessly pioneering this entire endeavor. Sir, by his continuous guidance, ensures we deliver a spectacular experience to the participants. Sir ने इस refresher course के पीछे उनकी सोच को हम सब से साझा करा, जिसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं. Next, I would like to place on record our heartiest thanks
to Professor Vinita Tuli for sharing with us a brief summary of different endeavors and initiatives that are being taken by Atmaram Sanatan Dharma College. मैम ने बहुत ही सुंदर शब्दों में इस रिफ्रेशर्स कोर्स के मूल तत्वों को हम सबसे साझा किया, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं. Ma'am is the force behind this entire program, and for that we are really grateful to Professor Tuli. Next, I want to place on record my heartiest thanks to the entire technical and organizing team for successful deliberation of the program. Finally, I would like to express my sincere gratitude to all the participants from different parts of country in our midst. I, on behalf of the entire organizing team, as well as on my own behalf, take this opportunity to thank you all for participating in 2 weeks refresher course. Once again, sincere thanks to all the dignitaries for gracing the occasion, and thank you so much. With this, we come to the end of this session, and I think we'll resume the next session in 10 minutes or so, if it is okay. Or we start with the next session at 3:30. Anjali, you just tell them that we are sending them mails regarding the assignment. Okay, thank you so much for helping me, Professor Tuli. It is just like we'll be just for those who are new to this refresher course that is online. I want to just share कि हम लोग from time to time आपके पास daily basis पे assignments भेजेंगे जिनको आपको करना जरूरी है, because it is a part of your assessment that has to be undertaken on a daily basis. Also, as Professor Tuli has shared with us, we will be having we will be making the groups in which they have to give the report of a particular day that has been assigned to them. That has to be submitted in the Google form that we will be sharing, and that is also a part of the assignment only. And this continuous filling of the continuous assessments assignment plus the feedback form is compulsory for the purpose of ensuring that the certificate is being issued for the refresher course. Am I correct? Absolutely. Yeah. तो यही कुछ चीजें हैं जिनका प्लीज जरूर ध्यान रखिए ताकि इसमें हमें कहीं भी आपको सर्टिफिकेट देने में बाद में कोई परेशानी ना हो. I think now we meet for the next technical session at 3:30 exactly. Yeah, with the same link you have. Yeah, the link for this particular date today, it is going to be same. So आप या तो log out कर सकते हैं, रहना चाहें भी तो रह सकते हैं. Otherwise, we come again joining this link at 3:30. Are we closing this link for now, Manvendra? Yeah, ma'am, we will end the meeting and we'll rejoin. So we are ending the meeting, requesting all, as Professor Tuli and Mr. Manvendra is saying, we join back at 3:30 again. Thank you so much all for being the part of this session. Thank you.